Crystal, your video is off and your audio is also off. It takes a lot of time. Simple instruction, keep it on. स्वयं वैरकर किधर हो तुम? Okay, 10 seconds, keep your video audio on, otherwise I'll take you out of the group. 10 seconds, keep your video audio on, otherwise I'll take you out of the group. Okay, the only person who's not responding is Swayam. Huh? ठीक है, cool. Crystal? Someone speaking, so I can't. So is that going to be throughout the class? Probably, yeah. Because my mom's working from home, so it's gonna be at this time. ठीक है, mute. Kashi, unmute. All right, okay, let's start. Trigonometry is going to be a very, very, very important chapter for you in grade 10 and further on. So trigonometry is something that you will keep using in 11th, 10th, 11th, 12th, and even in college in case you are doing anything related to that. Okay, so trigonometry का concept होना बहुत बहुत important है. अभी हम बहुत ही basic चीज पढ़ेंगे trigonometry में. But there is, I'll tell you what happens in every grade, in every batch in grade 10 trigonometry. So trigonometry शुरुआत में थोड़े बहुत फॉर्मूले वगैरह वो आसान है, वो याद हो जाएंगे, आइडेंटिटीज है वो भी याद हो जाएंगे. उसके बाद आएंगे प्रूव दैट क्वेश्चंस, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिया होगा, राइट हैंड साइड में कुछ दिया होगा, तो तुम्हें प्रूव करना होगा. और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लक बेस्ड चलेंगे शुरुआत में कि कुछ चीजें बन जाएंगी, कुछ चीजें नहीं बनेंगी. So normally in my experience I've seen that till the time you do not practice at least for 3 weeks, 3 हफ्ते उसको बहुत rigorously नहीं practice करो, तब तक तुमको उसमें confidence नहीं आएगा. और जैसे ही 3 हफ्ते निकल जाएंगे practice करते हुए उसको, suddenly you will start figuring out कि अच्छा ये सवाल दिया हो तो अब मुझे क्या step लेना है next. ठीक है, तो कई बार ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कभी कि सवाल दिया हुआ है और तुमको पता ही नहीं अगला क्या करना है, अगला स्टेप, ऐसा हुआ है कभी? तो ट्रिग्नोमेट्री में हर क्वेश्चन में होगा. ठीक है, और 11 12 में तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. हाउ मेनी पीपल आर टेकिंग मैथमेटिक्स इन 11th? यू कैन रेज हैंड ऑन Zoom, then I can count. 1 2 3 4 5 6 people. Add to that biology also, mathematics or bio. How many people are taking math or bio? नहीं, ऐसे हाथ उठाओ ना उसमें Zoom पे. जो मैथ वाले थे तो अपना हाथ उठा के ही रखो, प्लस बायो वाले उसमें ऐड हो जाओ. ओके, 8 people. तो बस एक बायो वाला कोई ऐड हो. ओके, सो मैथ, अगर तुम मैथ लो नहीं लो, लेकिन 11th में जो फिजिक्स होगी वो इट विल हैव ऑलमोस्ट 30% 40% ऑफ द होल मैथ सिलेबस एनी. तो वो फिजिक्स करने के लिए तुमको मैथ आनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और उसके लिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है वो आना बहुत है. ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 2 चैप्टर्स हैं तुम्हारे ग्रेड 10 में. वन इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सेकंड इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो चैप्टर के नाम से क्या लगता है तुमको, क्या ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्या आसान होगा? सृजक? सर बेसिक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशंस फॉर यूजिंग द बेसिक्स. हाँ, तो क्या डिफिकल्ट होगा? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट होगा कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट होगा? एप्लीकेशन डिफिकल्ट होगा, राइट? ऐसा लगता है नाम से, लेकिन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा. एप्लीकेशन फिर भी आसान होगा एज कंपेयर टू इंट्रोडक्शन, बट कुछ लोगों को एप्लीकेशन भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. सो हम उसको इसीलिए धीरे धीरे अप्रोच करें. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को अपना हाथ नीचे कर लो, स्वयं एंड सृजक.
ओके सो अभी काफी सारा हाइप मैंने कर दिया इस चैप्टर का, तो नाउ लेट्स स्टार्ट स्लोली एंड लेट मी पुट ऑन माय ये बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है, तो ये अगर चैप्टर तुमसे बनेगा तो तुम्हारे बहुत सारे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री में हम उन ट्रायंगल्स को स्टडी करेंगे जो राइट एंगल है। तो एक ट्रायंगल में कितने राइट एंगल्स पॉसिबल हैं? एवरीबॉडी स्पीक अप। One. क्यों दो क्यों नहीं पॉसिबल है? Because the sum of a triangle is 180 degrees. So if you have two right angles, that means what will be that remains the third sum as 0. So you can't have Third angle is 0, yeah, and that is not possible in a triangle. There has to be some angle in triangle. So एक right angle possible है maximum, और minimum हो सकता है कोई भी नहीं हो, right? So अभी right triangle बनाते हैं। स्कूल में हो गया? no. Yes, sir. पूरा हो गया? Also introduction हो गया. Okay. Introduction मतलब intro The to introduction trigonometry. chapter is done. Yeah. Introduction chapter is done. Yes, Yeah. so we're on the last exercise. So you are able to prove that questions आ गए तुम लोग को करने? Yeah. Okay, fine. Let's see. अभी तुम लोग से कितना कितना बनता है। चलो, तो ये हो गया राइट ट्रायंगल, ये हो गया एंगल। राइट एंगल को हम ऐसे दिखाते हैं, राइट? सो दिस इज राइट एंगल, दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2, राइट? ओके, सपोज दिस ट्रायंगल इज ए बी सी, इसको हमने नाम दिया, राइट? सो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे अगर मैं कहूं लेंथ प्लस ब्रेड्थ, उसमें फंक्शन क्या है? प्लस इज अ फंक्शन ऑपरेटर, राइट? प्लस कर रहे हैं। इस केस में फंक्शन है साइन थीटा, तो यहां पे साइन थीटा 1, कॉस थीटा 1, टैन थीटा 1, ये मेजर फंक्शंस, ठीक है? तो थीटा 1 के ऑपोजिट जो लाइन है उसको हम कहेंगे ऑपोजिट कहते हैं, या इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि दिस इज द परपेंडिकुलर। अभी नोट मत करो, इसको कहते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है सृजक? So it's the base. नहीं, एडजेसेंट का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? This means attached to a अटैच्ड। ये थीटा 1 के साथ अटैच्ड है ना ए बी, इसलिए इसको कहेंगे एडजेसेंट। और ये ऑपोजिट है थीटा 1 के एकदम ऑपोजिट, तो इसको हम एसी को कहेंगे ऑपोजिट, ठीक है? और एडजेसेंट, या फिर इसको कहते हैं बेस। तो ये बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये थीटा 1, या इसको कहते हैं एडजेसेंट और ये ऑपोजिट, ठीक है? और ये क्या है राइट ट्रायंगल में? इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस, राइट? तो परपेंडिकुलर का P, बेस का B, हाइपोटेन्यूस का H। तो साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू ये P बाय P करके लिखता हूं, या थोड़ा जगह छोड़ देता हूं। जस्ट अ सेकेंड। साइन थीटा 1, कॉस थीटा 1, और ये tan थीटा 1। तो साइन थीटा 1 इज व्हाट? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos theta 1 is adjacent upon hypotenuse, and this is opposite by adjacent, right? This can be written as sin theta 1 is p by
P का H. by H. this is P by H and this is P by B, right? ये पूरा डायग्राम बना के इसको अच्छे से और नोट करो. I'm done. I already. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Now as you can see theta 1 में ये था, तो थीटा 2 का क्या होगा? तो अभी एडजेसेंट ऐसे बेस करके मत लिखना, यहां पे अब ए बी ए सी करके मुझे बताओ कि थीटा 2 का क्या होगा. साइन थीटा 2, कॉस थीटा 2, टैन थीटा 2 कितना कितना होगा मुझे चैट पे बताओ. बताओ. क्या वो बता रहे हो क्या? चलो गौतम तुम मुझे बताओ साइन थीटा 2 क्या होगा? बोलो. Sir, I'm not confirmed, but I think so. P upon H. नहीं, ए बी ए सी ऐसे करके बताओ ना. ए बी ए सी बी सी. Yes, sir. It's P upon H. फिर मैं कह रहा हूँ ए बी बोलो, उसको पी मत बोलो. ए बी है क्या? Okay. Yeah, sir. So, ठीक है छोड़ो. sir. रुको 1 मिनट, मैं वापस से एक डायग्राम बना तो आसान हो जाएगा तुमको बताना. ठीक है, ये नोट कर लिया ना तुम लोगों ने. एक और फॉर्मूला नोट कर लो. tan थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 बाय cos थीटा 1, राइट? हो गया?
डन? Yes, sir. चलो, ये एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी. अब यहाँ पे दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. टेल मी साइन ए कितना होगा, कॉस ए कितना होगा, टैन ए कितना होगा, साइन बी कितना होगा, कॉस बी कितना होगा, टैन बी कितना होगा. बताओ. एवरीबॉडी चैट में लिखोगे, बहुत टाइम लगेगा, मैं एक एक करके पूछते जाता हूँ. गौतम बोलो, साइन ए कितना होगा? Yeah, sir. बोलो. Yeah. 1 second, sir. क्या फॉर्मूला क्या है? पहले मेरे को फॉर्मूला बोलो, उसके बाद इसके टर्म्स में बोलो. Sir, sine is opposite upon hypotenuse. Yeah. करेक्ट. तो साइन ए अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. अपोजिट क्या है यहाँ पे? Sir, opposite is CB. सी बी. हाँ, तो यहाँ पे ए बी सी लिख दिया ना मैंने, तो यहाँ पे ऑपोजिट क्या है? Yeah, sir. So CB upon CA. अब जब मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, फिर तुम सी बी बता रहे हो. पिछले बार मैं कह रहा था ए बी ए सी बताओ, तब तुम बी एच बोल रहे थे. ये लिखा है ना यहाँ पे, सी बी की वैल्यू क्या है? सी बी की वैल्यू क्या है? C और B की सब. सी बी Yeah, की वैल्यू C क्या है? ना sir. C. सी बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? Sorry, B होगी ना sir. बी. नहीं sir, मैं confused. Yeah, B. क्यों, क्या कंफ्यूज क्यों? बी अपॉन Yeah, sir, साइन है, B. फिर हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? Yes sir. So C. सी. तो बी बाई सी हो गया. ओके. कॉस ए की वैल्यू बताओ मुझे सृजक. सर A by C. ओके. अनिका मांग ले. Sir, B upon C. बी अपॉन C. बी अपॉन सी कैसे? Sir, tan cos theta is opposite upon hypotenuse. No. नहीं, देख लो फॉर्मूला देख लो. Sir, on adjacent, so A. नहीं, लेट अनिका रिस्पॉन्ड एंड मीनवाइल अदर्स आल्सो. जब मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग किसी से भी पूछता हो ना, तो तुम लोग चैट पे आंसर दो, और वो पर्टिकुलर पर्सन मुझे यहाँ पे आंसर दे. अनिका क्या हुआ? फॉर्मूला क्या है टैन का? Sir, opposite upon hypotenuse. नहीं, टैन का फॉर्मूला लिखा नहीं है क्या? नहीं sir. क्यों? अच्छा. अभी लिखा है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखा है ना. तो यहाँ पे क्या होगा? ऑपोजिट, ए का ऑपोजिट क्या है? अच्छा. Sir, P upon B. So it will be. क्या होगा? तुम लोग तो बोल रहे थे स्कूल में करा लिया, तो ये तो एकदम एकदम बेसिक है. अच्छा, लुक अनिका, फॉर्मूला क्या है टैन ए का? Sir, opposite upon adjacent. ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो ए का ऑपोजिट क्या है? Sir, B. बी है, तो ये बी हो गया. अपॉन एडजेसेंट, ए का एडजेसेंट क्या है? Sir, A. ए. तो बी बाय ए हो गया ना फिर. Yes. ओके. क्रिसल, साइन बी. So sine is opposite upon hypotenuse. हाँ. So will it be like C upon C or something? नहीं, तो ये नहीं होगा ना, बिकॉज बी इन इटसेल्फ इज राइट एंगल. तो ये इनमें से कुछ नहीं होएगा. ठीक है. अब हम करेंगे So साइन सी. It's not Sine C. applicable for. It's not applicable when theta is the right angle, right? या इट इज, मतलब उसकी एक वैल्यू है साइन 90 की, वो मैं बाद में बताऊंगा. बट अभी बताओ साइन सी. साइन सी की वैल्यू क्या होगी क्रिसल? C upon A. साइन सी विल बी व्हाट?
C upon फॉर्मूला क्या है? opposite upon hypotenuse. तो C का ऑपोजिट क्या है? A. तो A होएगा ना फिर, A अपॉन फिर Sorry, A upon C upon. या ओके. अग्रिमा, Yes, sir. वीडियो किधर? So पीछे कोई चेंज कर रहा है, so आप टर्न ऑन माय वीडियो. वो 2 मिनट में चल जाएंगे तो मैं ऑन कर दूंगा. ओके. cos C की वैल्यू बोलो. So B upon C. cos C is adjacent upon hypotenuse, so it will be B upon So C. B upon Okay, C. cool, good. और किसे? समृद्धि को कर tan C. Sir, A by B. तो tan का वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये उसका ऑपोजिट हो गया A अपॉन B. राइट, तुमने क्या बोला था? मैंने बोला था A by B. हाँ, तो सही है, A by B. Done. Cool. Here's a question. This is 3, this is 4, right? And this is theta. So tell me what is sine theta, cos theta, tan theta. Everybody. Chat. स्वयं tan का फॉर्मूला है perpendicular by base, which is opposite by adjacent. लिख लो. क्या हुआ? स्वयं तुम्हारा वीडियो नहीं है. सृजक का आंसर आया. ओके, सृजक इज करेक्ट. समृद्धि, Yes, sir. H क्यों लिखा है? अगर ये दिया हुआ है तो H निकाल सकते हो ना तुम पाइथागोरस. Oh. First correct answer by Srijak, second correct answer by Mehek, third correct answer by Ishita. अग्रिमा, तुमने सिर्फ एक ही आंसर दिया, तीनों ने तो सिर्फ 3 लोगों ने आंसर दिया है. आई एम वेटिंग फॉर एवरीबॉडी टू गिव एन आंसर. या समृद्धि गिव ऑल 3 आंसर्स. Sir, आशका करेक्ट, अनिका करेक्ट. कौन पूछ रहा है? it's me, Ishita. Sir, in class, the teacher said that the complementary angles were not going to be taught this year. Yeah, So will we be learning it in this class, or will we not be learning it? we will be learning. Okay. See, there's just one formula. और मैथमेटिक्स में तुमने देखा होगा फॉर्मूला बताने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, but to master it will take a week, right? Yes. So we will do it, and based on whether you're interested to do those kind of questions or not, you can do those questions. बुक में तो हमने दिया ही हुआ है सवाल. If you see right now, we did a part of complementary angle. What is complementary, Ishita? Complementary is the angles which have the sum as 90 degree and 90. Correct. तो यहाँ पे tan A मतलब angle A and angle C are complementary to each other, right? Yes. So we just now did it. Yeah.
हाँ भाई बताओ। मेघा जैन, ओके। अग्रिमा, ओके करेक्ट। काशी अग्रवाल क्या हुआ बोलो, क्या डाउट है काशी बोलो। When we were taking out Cincy, Quasi, and Dancy, I was a bit confused in this because when I wrote the answers and when we were doing it, I got them all wrong. Yeah. So first of all, that's very good that you got it wrong and then you're asking. And that's a lesson for everybody that if you get it wrong, feel free to ask me. क्योंकि अभी तो टाइम है मिस्टेक करने का, राइट? तो अभी 1 महीना 2 महीना जब तक एग्जाम्स नहीं आते उससे पहले सारी मिस्टेक कर सकते हो। और फिर पूछो, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं आंसर देता हूँ यहाँ से, उनका गलत भी आया होगा तो दे विल नॉट आस्क। उससे घाटा किसका होता है? तुम्हारा घाटा होता है ना, क्योंकि द जॉब हियर इज टू लर्न। तो अगर कुछ भी गलत होता है पूछो। ओके काशी, टेल मी साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला क्या है? Sir, it's opposite upon hypotenuse. ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी का ऑपोजिट क्या है? तो साइन, ये जो सी है इसके साथ ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, लेकिन ये तो हाइपोटेन्यूज वैसे भी है, तो ये लगा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एडजेसेंट। और इसके ऑपोजिट ये जो है ये लाइन, इसको ऑपोजिट कहेंगे। Yes. Yeah, I बस, did a mistake there. हाँ, सो बस इसके बाद तो डायरेक्टली फॉर्मूले पे लगा, राइट? Okay, sir. Thank you. Yeah. All right. So how many people have given the answer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नहीं 8 नहीं, 8, 9, 10, 1-2 लोग बचे हुए। क्रिसल करेक्ट, अग्रिमा करेक्ट, मेगा करेक्ट, काशवी वेटिंग फॉर यू, समृद्धि करेक्ट, अग्रिमा करेक्ट, अनिका करेक्ट, आशका करेक्ट, स्वयं आंसर कहाँ है? सृजा करेक्ट। स्वयं, स्वयं तुम्हारा वीडियो भी नहीं है, आंसर भी नहीं है। गौतम, गौतम सर कर रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो। तो क्या कंफ्यूजन है बोलो ना, टाइम लेने से वो कंफ्यूजन थोड़ी हट जाए। सर हाइपोटेनियस का कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम आता है ओके। क्या? या क्या होता है? सर इसको जैसे इफ वी टेक द ट्राइंगल ABC, सो या एक मिनट, हाँ नहीं सर मैं कंफ्यूज हो, रुको सर। अरे तो मेरे रुकने तो तुम्हारा कंफ्यूजन कैसे हटेगा भाई? बोलो ना क्या नहीं पता, फिर मैं बताऊंगा तुमको। सर एक बार करके बताओ, एक बार करके भेजो आप बस यही आंसर। बोलो ना, करके बताओ। रुको रुको बोलने से करके टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये दो साइड्स जो हैं राइट एंगल जो बना रहे हैं, दो साइड्स, उनका स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये साइड जो होता है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो राइट एंगल के साथ नहीं कनेक्टेड है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, राइट? हाँ, अरे हाँ नहीं बोलो ना भाई कुछ। यस सर, यस सर। म्यूट नहीं करो, नोबडी म्यूट। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि ये दो AB और BC जो है वो राइट एंगल बना रहे हैं, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू CA स्क्वायर, CA स्क्वायर, AC स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे AB की वैल्यू क्या है? सर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होता है? यस सर, 9 प्लस 16 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। 9 प्लस 16 Yes, कितना sir. होता है? 1 second, 1 second, 12 15, yeah, it's मैथ्स बहुत वीक है सर, सॉरी। 1 मिनट यार, क्या अरे हो रहा गिन है? लो यार, हाथ से गिन लो, कोई बात नहीं। हाथ पे ही गिन रहा हूँ, मेरा कंफ्यूज हो रहा है मेरे को। 16 + 9 या 4 24 25 21 सेकंड, क्या हो रहा है आज पे? या ओके, नहीं सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, रुको। भाई काम करो, सर नहीं होता,
काम डाउन मैन, काम डाउन। एक जब कोई ऐसा होता है ना, जब हाँ। तुम पैनिक कर रहे हो या तुमको कोई चीज नहीं बन रही, तो टेक अ या स्टेप बैक। सबसे पहले अपने आप को काम करो। अभी क्या लिखा है यहाँ पे? 16 + 9, तो पहले 16 बोलो, उसके बाद 25 16 के बाद गिनना शुरू करो। 16 17 18 19 25 20 21 22 23 24 25, राइट? 9, तो ये 25 आया। ये हो गया 25 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब AC की वैल्यू क्या होगी? सर 5 रूट लिया 25 का। हाँ, तो क्या होगी? 5 5 होगी। सर अभी क्या गलत किया यार, नहीं होता। या 5 ना सर। हाँ, तो फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई? चिल। या 5 तो AC की वैल्यू होगी 5, तो AC की वैल्यू है 5। अब फॉर्मूला लगा के आंसर निकालो। 4/5 बस सही है, 4/5। ये sin थीटा हो गया। cos थीटा कितना हुआ? Yeah, cos theta was adjacent upon hypotenuse. Yeah, 1 second. Adjacent, na base upon hypo. Yeah, so it's 5/3. 3/5 adjacent upon Yeah, hypotenuse। yeah, और tan थीटा? 3/5 and 4/3. Good. All right, let's go to the next question। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे अब और। ठीक है, this is 9, this is 6, fine, this is theta। give me sin theta, cos theta, tan theta। स्वयं वायरकर, किधर हो तुम? I'll take you off the class। there's no response, there's no answer, there's no response। स्वयं, ना वीडियो ना ऑडियो, कुछ नहीं है। अग्रिमा, Yes, sir. Turn on. वीडियो। स्वयं, नो, आई कांट हियर यू। तुम्हारा माइक ऑन होगा लेकिन आई कांट हियर यू। nobody can hear you। maybe the mic is not selected on Zoom। yes, you can rejoin। So now I just disconnected the audio and it's very choppy। क्या तकलीफ है? तुम हमेशा 2 में ज्वाइन करते हो। एक हेडसेट खरीद लो ना, 200 रुपए का आता है, लगा लो उसमें। Hello, sir. हेलो। Can you hear me now? यस। So actually, there's some internet issue. अभी ठीक है, अभी ठीक है, चलो। ओके, फर्स्ट आंसर बाय सृजक। सृजक, सिंप्लीफाइड आंसर दो, सिंप्लीफाई करके दो उसको। पीपल डोंट गिव मी √45 9, इट कैन बी सिंप्लीफाइड।
Srijak has answered. Samruddhi एक आंसर दिया. सब एक साथ दो ना, तभी I can count. Sir, क्या use हुआ the इशिता? group में नहीं बोलना। Why so slow? Oh, sir, I'm solving. Sorry, I just got the answers. I'm just typing it Okay, out. all right. अभी देखो, जस्ट फॉर कन्वीनियंस डोंट राइट द क्वेश्चन की साइन क्या है कॉस क्या है, बस मैंने ऑलरेडी सीक्वेंस यहाँ पे लिख दिया साइन कॉस टैन, तो तुम सिर्फ नंबर लिख दो, जो भी आंसर आ रहा हो कॉमा कॉमा सेपरेट करके तुम आंसर दे दोगे, यू डोंट हैव टू टाइप द होल थिंग. All right. क्या गौतम नहीं बन रहा? हाँ क्या हुआ बोलो, ये बोलो ना, अनम्यूट करो ना भाई. नहीं सर, हाँ ट्रिग्नोमेट्री सॉरी उससे ही करेंगे ना, मतलब हाइपोटेन्यूस से समझा. हाँ कर रहा हूँ. ओके. Agrima, video is not on. Don't put off the video without informing me. अरे सृजक, Srijak, Yes, sir. when I say simplify, that doesn't mean that you find the root. It means that whatever can be cancelled out, cancel them. Like if you give me 6 by 9, that's not correct, because 6 and 9 still can be cancelled with 3. Sir, this is Ishita. I sent the answer. Yeah, cool. इशिता कहाँ गया? हाँ भेजा है. इशिता, तुम्हारे केस में भी तुमने रूट ही निकाल दिया, रूट नहीं निकाला. Even I've sent the answer, Mehak here. महक. हाँ. Sir, even I had sent you the answer. Or even I have sent it, Megha. Okay. Yes, I can see the answers. Yes. So once I calculate, then I'll tell you whether it's correct or not. Gautam, come in. बन रहा है? हाँ सर कर रहा हूँ. Good. Anika, come in. Sir, I've sent already. You sent already. Let me see. Anika. इसने भी रूट निकाल के भेजा. तुम लोग सिंप्लीफाई का मतलब नहीं समझते. ओके, लुक हियर, व्हाट इट मींस इज दिस. तो ये क्या हुआ यहाँ पे, 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस ये सपोज x है, तो x स्क्वायर, राइट. सो x स्क्वायर इज गोइंग टू बी 9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, which is equals to 9 plus 6 into 9 minus 6, right. So 9 plus 6 कितना हुआ गौतम? Yeah, 15. Yeah, 15. Yeah. तुमको आता है? 9 minus 6? 3. Okay. तो अगर x स्क्वायर की वैल्यू 15 into 3 है, which is equals to 45, right. तो x की वैल्यू क्या होगी, रूट 45. ओके, तो ये x आ गया, which is equals to root 45. All right. रूट 45 को और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 9 से कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज 9 into 9 5 are 45. So this can be written as root 9 into root 5, which is equals to 3 root 5, right. So x is 3 root 5. ये गौतम समझ में आया कैसे हुआ ये 3 root 5? Okay. So sin theta कितना हो जाएगा? Sin theta is perpendicular by hypotenuse, which is 3. I didn't understand how we got 3 root 5. Who didn't understand? So me too. So me too. I didn't understand. नाम बोलो, नाम. Crystal. Crystal. Unmute करके रखो Crystal. Then I can talk to you. यहाँ तक आया? हाँ, but then I'll have to talk to you, right? So me to take class, I have to hear you. So you need to find solution for that. X is equals to root 45, right? Unmute. I can't. I don't have your feedback. I got root 45. Root 45. Okay.
तो रूट 45 को हम अंदर लिख सकते हैं 9 into 5. Is that clear? Okay. Root 9 into root 5 can be written as root 9 into root 5. Is this clear? But 3 root 5 is तो रूट 9 की वैल्यू 3 है ना? अच्छा, Right? and 5 is as it is. 5 is what? 5 is as it is, right? 5 is as it is. मतलब, yeah. We did not change 5 because we don't know the root of 5 in a whole number. Okay, got it. 3 root 5 by sin theta क्या होगा? 3 root 5 by hypotenuse 9. So now simplify this, right? So it will be root 5 by 3. Cos theta will be base upon hypotenuse, which is 6 by 9, which is equals to 3 2s are 6, 3 3s are 9. And tan theta equals to perpendicular by base, which is 3 root 5 by 6. So it is root 5 by 2. Cool? Yes, sir. ठीक है? Clear for everybody? If anybody got it wrong, then let me know. So I wasn't able to solve like Now, after I got root 45. Yeah, now I was able to solve ठीक है, after fine. you. Cool, awesome. Fine, चलो next question देता हूँ. Sir, I have a question. बोलिए. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, can you just write root over 5 into 3 into 3 and then cut it Cut what? as root 45? Like if you write root over 5 into 3 into 3 upon 3 into 3. For the sine Okay, so you theta. are saying sine theta is equals to root over 5 into 3 into 3. 3 into 3, then Upon 3 into 3. divided by 9, 3 है ना? into 3. Yeah. Which is equals to 3 into 3. Okay, now उसमें क्या काटें हम? So you can't cut the 2 3s and the 3 in the root, right? Okay. No. I mean, how will you cut it? Because this is inside root, this is not inside root. What you can do if you want to go that way is this. You can say this root 5, root 3 is equals to root 5 into root 3 into root 3. ये हो गया ऊपर वाला. और नीचे 9 है, which is 3 into 3. Now 3 में कितने root 3 होंगे? 2. तो यहाँ पे लिखा root 3 into root 3 पहले वाले 3 का, फिर दूसरे वाले 3 का root 3 into root 3. अब इसको तुम काट सकते हो, ये कट गया, तो क्या बचा? 5 root 5.3. Root 5.3. But this does not make sense because this is too long. Okay. Too long steps to get what we could have just gotten in a jump. All right, everybody clear with this? Huh? Yes, sir. Chalo. When I sent you an image, actually, I did it that way. Your voice is not very clear, Kashvi. Are you using headphones or something? Sir, am I audible now? Yes, much better. Bolo. Yeah, sir, actually, I'm saying I have sent you an image of how I did it. I know it's wrong, but I want to understand, like, why didn't we do it that way? You sent it to me personally. You could have sent it in the group, तो फिर बाकी लोग भी help कर पाते हैं ना तुम्हारी. तो वही है ना, BC का तुम्हें रूट नहीं कैलकुलेट करना. अरे. Okay, fine. Just send it on the group. And everybody ready. कौन मुझे सबसे पहले बताएगा उसके में क्या मिस्टेक? सबसे पहले कौन बताएगा? Check. जो सबसे पहले बताने वाला है, सबसे पहले हाथ उठाओ. तब I'll call you. अग्रिमा ने पहले हाथ उठाया, फिर अग्रिमा ने हटा दिया, फिर अनिका ने उठाया, फिर इशिता ने उठाया, फिर मेघा ने, सृजक ने, महक ने. अग्रिमा क्या हुआ? अब अग्रिमा ने. हाँ, क्या हुआ? ऐसा गलती से डोर हो गया. गलती से उड़ गया था.
नहीं सर, गलती से लोअर हो गया था। अच्छा अच्छा, हाँ तो तुमने पहले उठाया तो बताओ क्या गलत है। सर उससे 45 का रूट निकालने की जगह शी डिवाइडेड इट बाय 2, हाँ काशवी, तो 22.5 हो गया। काशवी unmute and then bring your mic. Yes, sir. रूट 45 जो है उसको तुमने रूट निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 कर दिया। Yes, sir. I understand it now. हाँ ठीक है, गौतम और काशवी के बीच में कंपटीशन है आज। कि कौन 7th क्लास की मैथ बेटर करेगा आज। ओके नेक्स्ट, अगला सवाल दूं कॉम्प्लिकेटेड दूं किसी लेवल का दूं? सर सेम लेवल। ठीक है चलो। Fine, this is 18, this is 6, this is theta. Tell me sine theta, cos theta, tan theta. दो आंसर, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? सर रूट मिल गया है, उसे सिंपलीफाई नहीं कर पा रही। तो जितना बन रहा है उतना, जितना सिंप्लीफाई होता है उतना सिंप्लीफाई करो ना। यू डोंट हैव टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग। तो सिंपलीफाई हो ही नहीं रहा। Sir, I've sent you my answer. What is it?
Sir, I've sent you my answer. Yeah, I'm waiting for everyone else to check. Hello, sir. Okay, बताओ. So can you hear me? Yeah. So I found another way, but I don't know if that is correct or not. बोलो ना. एक मिनट पहले मैं Like, I कैलकुलेट have करके यहाँ पे लिखा देता हूँ, फिर तुम बताओ. तो यहाँ पे क्या हुआ? 18 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस ये x है तो x स्क्वायर, राइट? सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 18 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर. अभी कुछ लोगों ने 18 स्क्वायर की वैल्यू निकाली होगी. कितने लोगों ने 18 स्क्वायर की वैल्यू निकाली? वो निकालने की जरूरत नहीं थी. वो निकालने की जरूरत नहीं थी क्या? क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते थे तुम, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ टू टेक स्मार्ट स्टेप्स इन मैथमेटिक्स. नहीं तो तुम कैलकुलेशंस में इतना लंबा टाइम खिंच जाएगा तुम्हारा एग्जाम में, राइट? तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 6 इंटू 18 प्लस 6. गौतम 18 माइनस 6 कितना हुआ? -6 12 12 इंटू 18 प्लस 6 कितना हुआ? 24 हुआ. 24 को हम और क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 2, क्योंकि यहाँ बाहर 12 है, हमको एक और 12 मिल जाएगा तो हम रूट में उसको बाहर निकाल देंगे. तो 24 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 2, राइट? एक्स स्क्वायर. तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? रूट ऑफ 12 इंटू 12 इंटू 2, राइट? तो ये एक पेयर मिल गया हमको, तो रूट में बाहर जाएगा तो एक बाहर जाएगा, तो बच जाएगा 12 रूट 2. गॉट इट? कितनी आसानी से निकला ये. और इसी को तुम पहले 18 स्क्वायर निकालते, फिर 36 से माइनस करते, फिर जो आया उसका फिर से रूट निकालते, ज्यादा टाइम लगता. तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली निकाल दिया 12 रूट. तो दिस इज 12 रूट 2. गॉट इट? तो अब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच इज 6 by 18 व्हिच इज इक्वल्स टू 1 by 3. cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस व्हिच इज 12 रूट 2 डिवाइडेड बाय 18. तो 6 2 root 2 upon 3. हाँ, so 6 2 are 12, 6 3 are 18. So this will be 2 root 2 upon 3. Tan theta is going to be perpendicular by base, which is 6 by 12 root 2, which is equals to 1 upon 2 root. Right? Simple, easy. अग्रिम आप देखो, तुमने मुझे भेजा 3 upon root 42. रूट 42 को भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना फिर हम. तुम्हारा सब कुछ 42 पे चल. So got it? How you should do it? और ये मैंने अभी किया भी था, बट कुछ लोगों ने नहीं फॉलो किया उसको. So you should follow what I'm doing. कंप्यूटर साइंस करते होगे तुम लोग? Sorry? कंप्यूटर साइंस है क्या तुम्हारे कोर्स में? कोडिंग है क्या? कोडिंग? No. नहीं. हाँ? क्या? No, sir. We don't have. ओके. ये पहले सवाल कर लो, हो जाए तो बताओ. हो गया? Yes. Yes, sir. So I got kind of same answer. काइंड ऑफ सेम क्या होता है? Not exactly. Like instead of 12 root 2, I got like root 12 into root 2. वो सेम थोड़ी है भाई. 12 के अंदर 12 रूट के अंदर चला गया. दैट्स नॉट सेम ना. Like I didn't understand how the 12 root 2 came, like the 12 came out. हाँ, गुड दैट यू. हाँ, तो आज पूछो फिर ये सवाल, ठीक है? तो देखो, रूट 4 की वैल्यू क्या है? रूट 4 की वैल्यू क्या है? स्वयं आर यू देयर? स्वयं, कितने लोग को समझ में नहीं आया ये रूट 12 इंटू 12 है तो बाहर 12 आ जाएगा, एक 12, ऐसा क्यों हुआ? कितने लोग को नहीं समझ में आया? पूछो मुझसे.
It got disconnected. हाँ, आई वॉज आस्किंग स्वयं, ये √4 की वैल्यू क्या होती है? 2. 2, क्योंकि अंदर है √2 इंटू 2, तो √2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं √2 स्क्वायर, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होके 2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे √12 स्क्वायर इंटू 2 है ना, तो √12 स्क्वायर इंटू √2 ये बचेगा, तो √12 स्क्वायर इज 12 इंटू √2 ऐसा बचा। आया समझ में? हाँ स्वयं Yeah, I got आ गया? it. Yeah. ठीक है, ओके। तो देखो कंप्यूटर साइंस जब तुम करोगे ना, तो कितने लोगों को कंप्यूटर साइंस करना है लाइफ में बाद में? So maybe. Okay. So computer science is all about mathematics, at least in good colleges. तो अगर तुम किसी टॉप नॉच कॉलेज से करोगे कंप्यूटर साइंस, so the major thing that they'll teach you is algorithm. पता है, कभी सुना है algorithm नाम? Word. Yes, sir. Algorithm is a series of steps that get you the final outcome. ठीक है? तो which is a smart algorithm is where computer को सबसे कम number of steps करने पड़े to get the final outcome. ठीक है? तो तुम्हारे केस में भी when you are going to get the final answer, it should be in least number of processing. इसका ये मतलब नहीं कि तुम steps jump कर दो, इसका ये मतलब है कि तुम steps को कैसे लिखते हो जिससे वो कम से कम प्रोसेसिंग में फाइनल आंसर आ जाए। जैसे अभी मैंने क्या किया, 18 स्क्वायर नहीं निकाला, क्योंकि तुम पहले 18 स्क्वायर निकालते, उसको 36 से माइनस करते, फिर वापस रूट निकालते, फिर उसके फैक्टर्स निकालते, उससे बेटर है हम चलो स्क्वायर ही नहीं निकालते, है ना? सो दैट्स वेयर स्मार्टनेस कम्स इनटू पिक्चर नाउ, कि तुम्हें ये देखना पड़ेगा दैट यू आर बीइंग वेरी एफिशिएंट। यही आंसर 3 स्टेप में कैसे आ सकता है, 2 स्टेप में कैसे आ सकता है, सो दैट यू विल हैव टू डू। सो वो भी तुम ध्यान में रखते जाना, ठीक है? और क्या पजल पूछूं? पजल नहीं पूछूं? 2 ऑप्शन है, यू गाइस चूज, चैट पे बताओ मुझे, या तो मैं पजल पूछ सकता हूं या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछ सकता हूं। क्या क्या पूछूं? मेगा जैन सेट पजल, समृद्धि सेट पजल, स्वयं बैरकर सेट ट्रिग्नोमेट्री। उसकी भी स्पेलिंग गलत कर दी। Yeah. Wait, what? Oh shit. ट्रिग्नोमेट्री, I'm writing. सृजक पजल, महक ट्रिग्नोमेट्री, महक अच्छा, पजल ट्रिग्नोमेट्री, पजल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, कूल। तो और थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं पजल पूछता हूँ। और ये पजल ऐसा होगा कि तुम्हारा पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट हिल जाएगा नीचे से। आई मीन ऑफ कोर्स पजल डजंट मीन कि मैं कोई रैंडम पजल पूछने वाला हूँ। It'll be, I got this idea because you guys are making mistake. चलो ठीक है, पजल ही पूछता हूँ पहले, उसके बाद we'll get to trigonometry and you tell me what you find as an answer in this puzzle. Okay. So you are a shop owner, ठीक है? Everybody, you are a shop owner and you have multiple apparels in your shop. तो फिर एक लेडी आती है उस शॉप में और वो एक 200 रुपए का टॉप सिलेक्ट करती है, और तुम काउंटर पे बैठे हुए, तो वो आती है तुम्हारे पास और वो 200 रुपए का टॉप खरीदने वाली है, और उसने तुमको 1000 रुपए का नोट दिया। इमेजिन दैट 1000 रुपए का नोट चल रहा है, तो 1000 रुपए का उसने तुमको नोट दिया, तुम्हारे पास चेंज नहीं है, तो तुम अपनी नेबरिंग शॉप में गए, तो वहां से तुम चेंज लेके आए, ठीक है? तो गौतम, उसको 200 रुपए का टॉप खरीदना है, उसने तुमको 1000 रुपए दिया, तो तुम उसको वापस कितना दोगे? 800। तो तुमने उसको 800 वापस दिया, और तुम उधर उस शॉप से 1000 लेके आए थे एक्सचेंज, तुमने अपना 2000 का नोट दिया, वहां से 1000 लेके आए, तुम्हारे चेंज लेके आए 1000 रुपए का चेंज, ठीक है? फिर तुमने लेडी को भेज दिया, लेडी चली गई, 800 रुपए उसने लिया, वो चली गई। 5 मिनट के बाद जो नेबरिंग शॉप वाला है वो तुम्हारे पास आया और उसने बोला 1000 रुपए का नोट तो नकली है, तो अब तुमने उसको एक और 1000 रुपए दिए उसको, ठीक है? तो तुम्हारा टोटल लॉस कितना हुआ?
Put it on chat. Can you repeat? Did you laugh after saying can you repeat? Yeah. ठीक है. Okay, I'll repeat once more. I'll repeat once more. So you are. एक तो तुम्हारा वीडियो किधर है सर? Sir, today my internet is not good. ठीक है, कोई बात नहीं. तो स्वयं सपोज तुम शॉप ओनर हो, एक लेडी आती तुम्हारी शॉप में, वो 200 रुपए का टॉप खरीदती है, तुम्हारे पास आती काउंटर पे, तुमको 1000 रुपए देती है, तुम्हारे पास 1000 रुपए का चेंज नहीं है, तुम बाजू वाली शॉप में जाते हो, 1000 रुपए का चेंज लेके आते हो, ठीक है. अब उस चेंज में से तुम 800 रुपए उसको देते हो, क्योंकि उसने तुमको 1000 दिए थे, वो 200 रुपए का टॉप लेके जा रही, तुमने उसको 800 रुपए दिया. अब वो चली गई. उसके बाद 5 मिनट के बाद जो बाजू वाला शॉप वाला है वो आया और उसने बोला है 1000 रुपए का नोट तो नकली है. तो अब तुमने उसको और 1000 रुपए दिए बाजू वाले को, क्योंकि वो जो तुमने नोट दिया था वो नकली था. तो तुम्हारा टोटल लॉस कितना है? Anika said 200, Samriddhi said 1800, Anika said 1800, Kashvi said 2000. Okay, बताओ. कितना टोटल लॉस? अब ये सोच के बताना बाद में, ठीक है. वापस ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं. ये सवाल ऐसा सवाल है कि ये तुम जो भी आंसर देते जाओगे उसके बाद वो तो मैं नहीं बताऊंगा ना. दैट्स वेयर द ये क्वेश्चन पूरा हिला देगा तुम्हारा सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ. तो जैसे तुम आंसर मुझे दोगे मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हारा आंसर क्यों गलत है. Srijak said 1800, 2800, 2000. Mehak, you said 1000 or 0. What do you mean by 1000 or 0? It's either 1000 or 0. क्यों उसके बीच में और उसको छोड़ के कुछ नहीं हो सकता? 1200 नहीं हो No, सकता? according to me. हाँ? I don't think so. क्यों? मतलब हो सकता है, but like it's most probably 0. Okay, Mehak, tell me one thing. Yeah. What did you end up giving? So you ended up giving 800 to that woman. Yeah. Who deserved 0. So you ended up giving that, right? तो 800 दिया उसको तुमने, तो 800 रुपए तो वहीं चले गए तुम्हारे. Yeah. 200 रुपए का टॉप भी दिया उसको, तो 1000 रुपए वहां चले गए. फिर बाजू वाले शॉप वाले को भी तुमने 1000 रुपए दिए ना अपनी जेब से. Right. Yeah, so that's 2000. 2000 हो गया ना. 2000. फिर Yes, sir. फिर Yes, I got it. तो 2000 is the correct answer, right? Yeah. Wrong. But Because जब तुम लेके आए थे जब उसके पास से तुम लेके आए थे 1000, उसमें से तुमने 800 दिए, लेकिन 200 तो तुम्हारे ड्रॉर में उसके वाले बच गए ना, बाजू वाले, है कि नहीं? Yeah, but तो अब वो जब वो लेडी लेके गई तो वो 200 और 800 लेके गई, 1000 रुपए उधर नुकसान हो गया. अब जब तुमको बाजू वाले को देना है तो तुमको अपनी जेब से 800 ही ऐड करने ना, क्योंकि 200 तो उसके पहले से पड़े थे तुम्हारे पास. yeah, so 1800. 1800 हुआ ना Mehak? Right. Now this is also wrong, right? 1800 is correct answer, right? Mehak? This could also be wrong. I don't know. Yeah, this will also be wrong. I told you, I can shake your concepts. Anyway, I'll not give you the answer for this question right now. Let's get back to trigonometry. Yeah. Okay. A, B, C. This is 15. This is 8. Find sine theta, cos theta, and tan theta. Megha Jain, Yes, sir. you said 1000. How 1000? So, okay, I'm not sure, but I'll try to explain it. So the shopkeeper, the lady purchased 200 worth of goods.
So, and the 1,000 rupees is the original currency which lady gave, but it was a fake currency. And the neighbor gave like the 1,000 rupees changes. So, like the shopkeeper, suppose he gave the neighboring 1,000 rupees ka fake currency plus 1,000 rupees ka original currency. And the lady gave 200 rupees and the neighbor gave 1,000 as changes. So like the shopkeeper has 1,000 as changes and 1,000 as original currency, and the lady gave like 200 worth. So I don't know how to explain it. How But- can you not explain something which is so mathematical? Okay, so can I explain it a little bit later? I need to frame the answer properly. I'm not able to put it in words. Okay, fine. ठीक है, बताओ sin theta, cos theta, tan theta. सृजक तुमने वो वाला आंसर नहीं दिया? हाँ दिया था. इशिता अग्रवाल तुमने नहीं आंसर दिया था वो वाला? Sir, I gave. I said 1,200. अच्छा. Okay. Samruddhi and Srijak have got it right. Who else? Not time क्यों? Ishita got it right now. और? आशका, महक, alright. किससे नहीं बन रहा? Who is not able to do? हाथ उठाओ. अनिका मांगी, क्या हुआ? So just why I'm not able to simplify it. Varna everything else. Did you find the side? Yes, sir. How much? Just that only I have to simplify. √161. हाँ तो चलेगा ना. That's it. अच्छा, okay.
अभी देखो यहाँ पे भी क्लियर हो जाता पूरा, राइट? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23 इंटू 7, 7 प्राइम है, 23 भी प्राइम है, और कुछ तुम कर नहीं सकते उसके लिए। These are the answers. Okay, चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं। चलो ये तीनों बताओ। So I send the हाँ ठीक है, अभी दो लोग का आया है, महक एंड देन समृद्धि। इशिता अग्रवाल, simplified, you've not simplified. In one fraction you cannot have something in 3 and 6, it can still be cancelled.
So I sent it again. Okay. अग्रिमा, ये रूट 27 क्या होता है भाई? रूट 27 में दिख रहा है ना 9 थ्रीजा है, तो 9 बाहर निकलेगा, राइट? अग्रिमा, where's your video? So there's a network issue. I can't turn on my video. नहीं तो मैं, if I join through app to turn on the video, my mic won't work. So Crystal. Srijak. Okay, let's do 18 square equals to 9 square plus x square. X square equals to 18 square minus 9 square is equals to 18 minus 9, 18 plus 9 is equals to 18 minus 9 कितना हुआ? 9 into 18 plus 9 कितना हुआ? 27. कितना किया सबने? x square. अभी और क्या लिख सकते हैं इसको? 9 into 27 को लिख सकते हैं 9 into 3, है ना? इसका रूट तो बाहर क्या आएगा? 9 is equals to 9 root 3. क्या आएगा बाहर? Done? or even I've said. Yeah. अभी sin a क्या होगा? sin a is perpendicular upon hypotenuse, तो ये हो गया 9 root 3 upon 18, तो ये हो गया root 3 by 2. cos c कितना होगा? cos c होएगा बेस, ये इसका बेस ये हो गया upon hypotenuse, which is 9 root 3 by 18, which is equals to root 3 by 2. tan c कितना होगा? perpendicular by base, which is 9 upon 9 root 3 equals to 1 by root 3, right? So this is your answer. Root 3 by 2, root 3 by 2, 1 by root 3. अनिका, wrong हो गया तुम्हारा. Sir, I was just typing literally. I स्वयं just did correct. before. ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है. तो अनिका तुम्हारा लास्ट वाला रॉन्ग है. रूट 3 by root 3 by 1 by root 2. आशका सही है. अग्रिमा, सिंप्लीफाई. इशिता अग्रवाल 1 by root 2 कैसे है? I got confused. Instead of writing 9 to 3, I'd done the calculations, but I wrote in the end 3 root 3. So And tan c also you got as root 3. It will be 1 by root 3. so everywhere I wrote it as 3 root 3. Okay. Instead of Crystal, wrong. I took A, angle A for all of them. So I took cos A and tan A. So which was the difference in this question? ये देखना है कि कौन सा एंगल निकालना है. सृजक, why did you say root 3? Sir, after simplifying it gets root 3. Huh? So after simplifying. What after simplifying? Okay, it's 1 by root 3. Okay. Mehak Purohit, wrong. Yeah, so last one I got confused in. Okay. ठीक है, cool. Next question. Ma'am, I found my mistake and Okay. All right. ठीक है, तो ये है a, ये है a+5 और ये है 20. आया समझ में? एक साइड a है, दूसरा साइड है a+5 और ये साइड है 20. तो बताओ साइन a कितना होगा? साइन ए, साइन का होता है, तो पहले तो स्मॉल a की वैल्यू निकालनी थी. a+5.
Sir, in a plus 5, the whole square can be used as identity. Yeah. No, I could. Sorry. Excuse me, sir. Yeah. So will we have classes for like 2:30 to 4:30 and then 4:30 to 6:30? Right. Sir, I'm so sorry. Sorry. Arna, okay. Yeah. हाँ बोलो. Sir, I'm so sorry. I thought that there were 2 batches. Oh, okay. तो अब जो 2 बैचेस हैं वो तो वेकेशन के हिसाब से बनाइए ना, ताकि जो लोग शुरुआत में जा रहे हैं वो बाद वाली अटेंड कर लें और जो लोग बाद में जा रहे हैं वो अभी अटेंड कर लें. तो 2 बैचेस वैसी. It's okay, you not missed a lot. We are doing basics of trigonometry. You know what So sine cos tan is? Yes, sir. I've read so I will look on to the metering recording also. You look at what? Recording. Yeah, fine. You can look at recording. Thank you, sir. अभी तो ये सॉल्व करो पहले और वीडियो भी ऑन करो, वीडियो ऑडियो सब. Okay. And you also missed the nice puzzle that I asked these guys.
So I'm not able to do this. Can you? किसी से नहीं बना? Sir, I am also confused in this. क्या हुआ? नहीं सर, समझ नहीं आया. चलो देखो क्या होगा. 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5 होल स्क्वायर. क्वाड्रेटिक किया है ना तुम लोगों ने? या आता है क्वाड्रेटिक रूट निकालना? यस नो? क्वाड्रेटिक नहीं किया शायद. हाँ अभी नहीं किया. ओके ठीक है, फिर नहीं बनेगा. चलो फिर भी ट्राई करते हैं. ए स्क्वायर प्लस क्या होएगा? ए स्क्वायर प्लस 25 plus 10 is 20. 10. तो क्या हो गया? 2a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10a इज इक्वल्स टू 400. तो ये कितना हो गया? 2a स्क्वायर प्लस 10a और ये कितना हो जाएगा? माइनस 375 राइट इज इक्वल्स टू 0. अब a की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, है ना? इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आना चाहिए तुम्हें, जो तुमको नहीं आता शायद, है ना? अभी नहीं आता. ओके फाइन, ठीक है. तो ये ट्रिग्नोमेट्री जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक, जो हम पढ़ेंगे बाद में. ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन चक. लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. अभी तो फिर आ गया ना तुम लोग को ये साइन कॉस टैन निकालना आ गया? आर यू गाइस कंफर्टेबल? या ठीक है, तो फिर से फॉर्मूले लिखते हैं सारे. साइन थीटा इज इक्वल्स टू, बोलते जाओ. कौन बोलेगा? मैं नाम बोलूंगा. अनिका मांग ली, बोलो. साइन थीटा इज इक्वल्स टू opposite upon hypotenuse. opposite upon hypotenuse. Okay. Gautam, cos theta is equals to Opposite upon hypotenuse. वो तो sin theta है भाई. Adjacent upon hypotenuse. Sorry. और tan theta is equals to हाँ बोलो. opposite upon Adjacent. करेक्ट, adjacent. ये फॉर्मूला हो गया, है ना? अब इसके इनवर्स होते हैं. इनवर्स एज इन रेसिप्रोकल्स. रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है, इसको हम कहते हैं, आइडिया? Cosec. कोसेक थीटा. कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा को हम कहते हैं सेक थीटा. और 1 अपॉन टैन थीटा को कहते हैं कॉट थीटा. ठीक है, तो अगर कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट. सेक थीटा में क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट. कॉट थीटा विल बी एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. तो आई वुड सजेस्ट ये मत याद करना, नहीं तो कंफ्यूज होगे. सिर्फ इतना याद करना. ठीक है, नोट कर लो. So we have to note down everything, right? हाँ, you have to note down the whole thing, whatever I've written, left, right, सब कुछ. And we have to just learn the first part, like 1 upon sin theta and all. Yes. Okay.
Done? कर लिया note? No, sir. Yes. 1 minute. Yes, sir. Okay. Yes, sir. हो गया? No, sir. कितना टाइम है भाई? I'm sorry. Right. Yes, sir. Done. Okay. All right. If sine theta is equals to 4/5, cos theta की वैल्यू कितनी होगी? tan theta की वैल्यू कितनी होगी? बताओ. Sir, can you repeat? लिखा है सामने. Okay. So do we have to put it in the chat? Yeah. मैं correct. Srija correct. Samruddhi correct. Ishita correct. गौतम कैसे करेंगे इसको? आरना wrong. सर एक बार बताओ ना. देखो, तो ये साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो अभी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जहां पे हमको ट्रायंगल में कुछ दिया हुआ कुछ नहीं दिया हुआ. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ? ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है गौतम? 4. हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ है? 5. बस. तो जैसे पहले हमने किया था वैसे ही करना है. यार दोनों का वैल्यू तो दे के रखा है. यस यस सर. Sir, is my answer correct? Yes, correct. Anika correct. Ashka correct. Swayam correct. Megha Jain correct. आरना क्या गलत है? So actually, the side adjacent to angle A is like side adjacent to angle A is not there. इस फाइंड करो ना इसको. ये 4 है 5 है तो पाइथागोरस से फाइंड करो. Oh, okay, sir. किससे नहीं बना? क्रिसल. Yes, I'm sending it. अग्रिमा भेज दिया. ओके. करेक्ट. गौतम करेक्ट. आरना करेक्ट. काशवी और अग्रिमा, सॉरी काशवी और क्रिसल. Excuse me, sir. Hmm. If we were given the cosine theta
then we could have, without using the Pythagoras theorem, we could have found out the side adjacent to angle A also, right? If it were given in fractions. Yeah. Okay, sir. Don't call it cosine, call it cos. Okay, sir. Okay, Crystal also correct. Chalo, next question. Is sine theta equals to 2 upon root 5? Tell me what is cos theta, what is tan theta? Jaldi. Okay. So who all have given the answer? Samruddhi gave the answer. Correct answer, Samruddhi. Ishita correct. Arna correct. Ashka wrong. Meh correct. Anika. What is root 1, Anika? Anika? Root 1 क्या होता है? Zero. Root 1 0 क्यों होगा? 1 स्क्वायर क्या होता है? So one. तो root 1 कितना होगा? Root one is also one. Right. Okay, Srijak. Wrong, Srijak. Srijak. Yes, sir. क्यों गलत क्यों किया? The root 1 is equal to 1, right? अरे बट रूट 1 नहीं, तुम्हारा हाइपोटेन्यूज क्या चल रहा है? ओके, गौतम. यस सर. रूट 21 क्या आया तुम्हारा? व्हाट इज रूट 21? ओह हाँ, जस्ट मैंने रूट 5 जो देख के रखा है ना उसको 25 ले लिया. ओके, मैंने गलत किया यार. वैसे सॉल्व करते करते आगे करा. सॉरी सर.
तो वापस सही करके भेजो. Sir, I sent my answer again. Ashka, yeah, correct. और कौन बच गया? क्रिसल. क्रिसल का भी आ गया. All right, correct. स्वयं. Yes, sir. I'm sending. अग्रिमा. Yes, sir, just send. All right. Swayam. Kashi, what's your answer? Also, actually, I got locked down because of the net. I'm actually doing it right now, but there was some net issue, so I was fixing the laptop right now. Okay, do it. So is my answer correct? करेक्ट तो है लेकिन सिंप्लीफाइड नहीं है. Okay. So for the cost one, it's not simplified. Right. तुम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेन देखा क्या? Yes, sir. नहीं सर अभी नहीं. कैसी है? That's very good. हाँ. So for me, it was very good. Yeah, so sir. I also want to go. It looks nice. What if we have? So I told you, right? We used to do winners dinner, पहले, which is a lounge party that we used to do. Have I told you about winners dinner? Yes, sir. No, sir. Oh, तो जिन लोग So ऑफलाइन yes, में थे told उनको us. बताया था मैंने, right? Yeah. ठीक है. तो अभी मैं बता देता हूँ, चलो. So that you know what's going to happen this year also. So you see that वो TED लिखा हो ना उधर, TEDx. You know what TED is? Yes. Yes, sir. What is it? So it's a channel on which you can see for 2 minutes or 3 minutes talk. So it can be long too. Yeah, not 2-3 minutes. So TEDx basically Yes, is sir. a platform. It's an international platform where they call people to speak about ideas and stuff. Okay. So anyway, I was called for multiple TEDs and also some other talks. तो मैं पहले देता था. What would I talk about? So हम लोग बहुत research करते थे about education, how children's brain works, what motivates them, how much should you push them. What is the stress level which is optimum for a child. ये बहुत सारी चीजें हम लोगों ने research की. So CBSE would call me to speak to the principals. TED would call, Harvard would call. So I've spoken in all these platforms. But what would I speak about? So one of the topic that I spoke about was reward mechanism. And we also researched and it made a lot of sense. Plus we implemented it in Y Academy and we saw amazing results. So ये mechanism क्या है? तो स्टैनफोर्ड में एक रिसर्च हुई थी बहुत पहले, जहां पे एक प्रॉब्लम दिया था. चलो मैं तुम्हारे साथ करता हूं अभी, ठीक है? कितना टाइम बचा अपने पास? को 2 मिनट ही बचा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यू वांट टू डू इट नाउ? करना है? ठीक है. ओके. तो देखो फटाफट करते हैं, ठीक है? एक टेबल दिया हुआ है और उस टेबल में थंब टैग्स, पता है क्या होते हैं थंब टैग्स? पिन जैसा होता है थंब से दबाने वाला पिन. Yes. Yes, sir. तो एक बॉक्स में बहुत सारे थंब टैग्स रखे हुए हैं, ओके? और एक मैच बॉक्स रखा हुआ है और एक कैंडल रखा हुआ है. अब ये प्रॉब्लम है कि इस कैंडल को इस तरह हमें जलाना है कि वो जो जब वो मेल्ट हो तो वो टेबल के ऊपर नहीं गिरे. तो हम कैसे क्या कर सकते हैं कि वो टेबल के ऊपर नहीं गिरे? वी हैव अराउंड 50 थंब टैग्स. तो उसको क्या कर सकते हैं हम कि वो जब मेल्ट हो तो टेबल के ऊपर नहीं गिरे? So we have a matchbox, right? हाँ.
मैच बॉक्स से तो ऐसे जलाएंगे ना. Maybe we can like open the shape of the thumbtack so it forms a straight line, and then you can like place it, and on that you can place the candle and then light it. Open the what? So, a thumbtack is like the one that you, like sort of a clip, right? That you put on the paper. So it's like I've always like opened a thumbtack. So you can open it into a straight line. You can Okay. place multiple thumbtacks, and then you can like place it on that. Okay. So when it melts, it will fall Cool. there. So that's one answer. Other answer, there can be multiple ways, right? बताते जाओ, बोलते जाओ. क्या कर सकते हैं हम कि वो टेबल के ऊपर वो. Can you keep the candle away from the table or not on the table? But where would you keep it? On the air? On the ground. तो फिर ग्राउंड में गिरेगा. तो सर टेबल पे नहीं गिरा रहा Question है. was तो table देखो पे नहीं गिरना चाहिए. इमेज में ग्राउंड तो नहीं दिया हुआ ना, तो हमें नहीं पता ग्राउंड है कि. तो Sir, the image में क्या होगा? thumbtacks are in a box, right? Who's speaking? Kashvi is speaking. Okay. Yeah. Yeah, the thumbtacks are in a box, right? Yeah, so we can remove the thumbtacks, place them on the table, and keep the candle in the box and light it. Okay. Cool. Any other answer? We can use the box as where the candle backs will False. fall down. Okay. Cool. Any other answer? Will this work? Whatever Kashvi said, will it work? So after a point of time, I think like the wax will go down. Okay, it'll start. Yeah, overflowing. Okay, cool. Anyway, ठीक है. तो ये एक प्रॉब्लम दिया स्टैनफोर्ड ने एक सेट ऑफ लोगों को. तो उन No, लोगों sir, को. actually, it depends on the size of the candle. It will go out or not. हाँ, ठीक है. Got it. But the problem is not the focus here. The focus is what comes after this. तो ये इमेज दी कुछ लोगों को और बोला ये प्रॉब्लम है कि ऐसे लगाना है उसको. तो कुछ लोगों ने बोला अच्छा दीवार पे ऐसे थंब टैग से चिपका के लगाएंगे, साइड में लगाएंगे ताकि गिरे नहीं. ऐसे बहुत सारे निकाले लोगों ने सोल्यूशन, और काशवी ने जो बोला वो भी निकाला, लेकिन थोड़े टाइम के बाद निकाला. एक फिर दूसरी इमेज दूसरे सेट ऑफ लोगों को दी गई. उस इमेज में क्या था? देयर वर थंब टैग्स केप्ट आउटसाइड ऑफ द बॉक्स ऑफ द थंब टैग्स. तो एक बॉक्स है, थंब टैग्स बाहर रखे हुए, कैंडल है, मैच बॉक्स. फिर पूछा कि अब क्या करें ताकि वो टेबल के ऊपर नहीं गिरे. एवरीबडी इंस्टेंटली सेड कैंडल को बॉक्स के ऊपर रखो. यू गेट इट? Getting the difference? So Stanford, by this research which was done long time ago, they said that there is a intellectual work required where one had to also think अच्छा thumb track रखा हुआ उसको हटा के इसको उसके लिए भी यूज कर सकते हो. There's a bit of intellectual work, right? अब उन लोगों ने क्या किया, एक को सिंपल प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि जहां पे थंब टैग्स बाहर रखे हुए सिंपल प्रॉब्लम, जहां पे थंब टैग्स अंदर रखे हुए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, वहां पे आदमी को सोचना पड़ रहा है. अब उन दोनों प्रॉब्लम्स को अलग अलग करके अलग अलग ग्रुप ऑफ लोगों को दिया. हर एक प्रॉब्लम को दो सेट ऑफ लोगों को दिया, दो सेट ऑफ ग्रुप्स को. और जब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम था जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पे एक ग्रुप को बोला कि फटाफट ये करना है, जो सबसे पहले करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा. और एक दूसरे ग्रुप के लोगों को बोला कि ये बस करना है, रिवॉर्ड की बात नहीं की. तो सरप्राइजिंगली वहां पे जिन लोगों को रिवॉर्ड के लिए बोला गया था उन लोग वो वाला आंसर ढूंढ नहीं पाए जल्दी, उनको ज्यादा टाइम लगा. और जहां पे रिवॉर्ड के लिए नहीं बोला गया था वहां पे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो गई. गेट इट? अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, तो सिंपल वाला प्रॉब्लम, वहां पे लोगों को बोला गया जितनी जल्दी तुम ये कर लोगे उतना तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, और दूसरे में कोई रिवॉर्ड की बात नहीं की, तो वहां पे रिवॉर्ड काम आया. So basically the research says that if there is an intellectual work involved, you should not reward a person. क्योंकि रिवॉर्ड करने से क्या होता है, they start thinking inside the box. They do not innovate. They do not try new things. They do not make an attempt. But if there's no intellectual work, there's laborious work, there's repetitive work, then you should reward the person. So can you see it in Y Academy perspective? तो अभी जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कह रहा था, गलत आंसर हो रहा, होने दो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैं तुम्हें पहली बार पढ़ा रहा हूँ उसको, राइट? तुम्हें नहीं पता कैसे सॉल्व करना. So I want you to think of various different ways. Even if you're wrong, it's okay. But after I've told you how to do it, and now you're supposed to do the homework, then that's laborious in nature, right? You already know. मैंने पहले से बता दिया कैसे करना है, लेकिन जब तक तुम 50 सवाल वैसे करोगे नहीं, तुमको बनेगा नहीं. So as a teacher, I want you to do it.
So I should put some reward for it because that will make you do it faster. फ्लिपर में भी तुमने देखा होगा हमने वहां पे टाइमर नहीं डाला. So as a student you do not get more marks by doing a question faster. We consciously did not put it, whereas others would put it like quizzes, Kahoot, they will have timer. क्योंकि जब वो टाइमर चालू होता है तो तुम फिर अपना दिमाग नहीं सोचते, तुम फटाफट आंसर देने की कोशिश करते हो, तो उसमें लर्निंग कम होती है, यू नो. तो हमने एक रिवॉर्ड की तरह एक बहुत बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे हम, जो होती है अराउंड नवंबर दिसंबर. वी कॉल इट विनर डिनर. कहाँ से आया विनर्स डिनर? The phrase winners dinner comes from or something. huh? The PUBG game, winner PUBG, winner right? chicken dinner. हाँ, winner winner chicken dinner. So because people used to play a lot of PUBG, आजकल नहीं खेलते शायद. तो वहां से हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट निकाला विनर्स डिनर, एंड इट वाज अ ह्यूज लाउंज पार्टी वेयर यू गो टू, वी बुक अ complete lounge for only us, and you dress up and you come, and this is around winter's time, so very nice weather. There's a DJ, you get extremely good food, you have like the whole spread, you get amazing drinks, everything is non-alcoholic of course, but there's this whole lot of charm in this whole event. But only those people who have completed all the homework get the pass. And based on how you've completed the homework, if you've been on time, so there are 3 categories of passes. There is platinum pass, there's gold pass, and there's bronze pass. So अलग अलग सबको अलग अलग अथॉरिटीज है, तो वहां पे लाउंज सीटिंग होती है, वहां पे चेयर सीटिंग होती है, तो सबको अलग अलग वो मिलता है बेस्ड ऑन द पास दैट यू गेट. एंड व्हेन वी अनाउंस दैट, आई स्टार्टेड गेटिंग फीडबैक फ्रॉम पेरेंट्स की बच्चा रात को 1-1, 2-2 बजे तक भी कंप्लीट कर रहा है, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू डू दिस बिकॉज दे गेटिंग समथिंग फॉर इट. So we realized it's good idea, and we continued year after year we did it. हमारे Instagram पेज पे भी तुम देखोगे तो तुम्हें फोटोज दिखेंगे, देखा है? देख लेना जाके Y Academy Instagram पेज पे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा. बट कोविड के टाइम पे नहीं किया, बट इस साल दिख रहा है कि कोविड शायद नहीं होगा, तो फिर we'll do the party again. So अब तो हमारे पास फ्लिपर है, तो we'll have exact count कि पॉइंट्स के बेसिस पे हम दे सकते हैं, कितना होमवर्क कंप्लीट किया उसके बेसिस पे, कितनी कंसिस्टेंसी तुमने दिखाई उसके बेसिस पे, राइट? सो नॉर्मली लोग एग्जाम में कितने मार्क्स है उसके बेसिस पे अवार्ड देते हैं, बट हम उसके बेसिस पे नहीं देते. हम देते हैं कि तुमने कितनी मेहनत की है पूरे साल, उसके बेसिस पे तुम्हें अवार्ड मिलेगा. क्योंकि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे मार्क्स ऑफकोर्स अच्छे आएंगे. सो यू विल नॉट बिलीव, जो बच्चों ने ग्रेड 9th में 45-50% मार्क्स लेके आ रहे थे, वो लोगों ने ग्रेड 10th में 95-97% मार्क्स स्कोर किए, बिकॉज दे प्रैक्टिस्ड हार्ड. So the same goes for you. You have to practice throughout the year. और वो practice करोगे तो हम तुम्हें reward देंगे. So it's like that. ठीक है? So we'll do this party in November. People would sing, they would dance. If people can play, then they play. So everything. Cool. So we'll announce the rules for winners dinner. थोड़े टाइम में announce करेंगे हम. तो उसके बहुत strict rules होते हैं, कब submissions होनी है, कैसे submissions होनी है, सब होता है उसका. ठीक है? चलो फाइन. हाँ, so I was asking that हाँ बोलो. When will this start, like for you for you guys? No, for winner, what was that? हाँ वही विनर्स डिनर ना, तो हम उसके रूल्स अभी मैंने बोल दिया लास्ट ईयर, मैम को बोल दिया था 4-5 दिन पहले मैंने बोल दिया था that now we should make the rules for this year and we can tell the students. क्योंकि इस बार अब हमारे पास फ्लिपर है, तो हमारे पास और डेटा है कि हम किसको क्या क्या दे सकते हैं, हाउ मच इज अ चाइल्ड एक्चुअली वर्किंग. तो जो लोग बिल्कुल ही नहीं कर रहे होमवर्क, और बहुत सारे बच्चे थे जो, अगर 2-3 बच्चे होते हैं जो नहीं कर रहे होते, तो उनको पता चल जाता है कि उनको तो नहीं मिल रहा पास, और बाकी सब बच्चों को पास. और पास भी ऐसे नहीं मिलता, इट गोज इन अ वेरी नाइस स्वैंकी, देयर इज अ वेरी स्वैंकी पास दैट यू गेट टैग्स एंड एवरीथिंग. सो वो कुछ लोगों को नहीं मिलता अगर वो होमवर्क नहीं करते, फिर वो एंड में जाके होमवर्क करते हैं बहुत सारा. तो उससे बेटर है भी कंसिस्टेंटली अभी से करना शुरू करो, तो अच्छा रहेगा. ठीक है, फाइन. आई विल टेल यू मोर अबाउट इट इन कमिंग टाइम्स, बट my homework is 100%. lol. कूल, ऑसम. ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म. अगली क्लास में हम और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. So you were going to ask something. हाँ बोलो ना. हेलो
So I was asking what was the answer for the puzzle that you gave, the Who's shopkeeper asking? one. Ishita is asking. Okay. I don't want to tell you the answer right now. So Think more. Think more. Sir, you just gonna leave us in suspense. That's the whole point. Sir, I have a kind of explanation to my answer. Okay. So Bolo? should I say it right now? Of course. Bolo. Okay. Excuse me, Okay. sir. हाँ बोलो मेघा. So actually, हाँ so बोलो now Samriti. we have to Samriti is book saying it, something. can I हाँ know? you can go Samriti. You can go. Okay, thank you, sir. Yeah. Thanks. हाँ मेघा बोलो. Yes, sir. So I think the total loss is of 2,000 rupees and not 1,000. So how? So the sequence of the outflow is, so the lady comes and asks for 200. So Right. like she asks for the goods worth of 200. That's it. She gives you 1,000 rupees ka fake note. So since it has no value, I'm gonna name it as like X. So you give this note to the other shopkeeper, and he gives you 1,000 in return, like the change of 1,000. You give the lady 800 rupees. Then the other shopkeeper comes and gives you the fake note, and he takes back 1,000. So now you okay. Yeah, now if you put this in an equation form, so the loss of shopkeeper will come to like 1,000 rupees. But the actual loss is 2,000 because the note he has from the lady has no value and he can't use it in the future as well. The total loss is 2,000 rupees. Okay, cool. But he has 200 rupees from the previous transaction kept in his drawer. वो तो real है ना? Which did not belong to him, belong to the shopkeeper. तो total loss कितना हुआ? 1,800 then. 1,800 हुआ ना? Which is a wrong answer. So it's 1,800. So how can you prove that it's not 100? It's not 1,800. I can prove. How can you say? I can prove it. Yeah. देखो Prove. तुम लोग सारे लोग सिर्फ कहानी सुना रहे हो. You're not using mathematics. Sir, is it just 1,200? How? So because 800 तो जो 1,000 का change था वो तो बाजू वाले का था ना, and 200 का top गया and he had to give 800 1,000 rupee, but उसमें से भी 200 ही already has that. So देखो अभी भी क्या क्या कहानी सुनाई, right? So that is why I ask this question to students sometimes to tell them that कहानी सुना के तुम कोई भी चीज अपने आप को बता सकते हो कि हाँ यही सही है, यही गलत है, यही सही है, यही गलत है. Are you guys debaters? Do you guys debate professionally, like technical debate? No. कोई भी नहीं करता तुम्हें? Not professionally. Debating नहीं करते I did debate in my previous school. Last You year did debating. You did debating. Yes, sir. Okay. So a very major rule of debating is that you should not have logical fallacies in the arguments that you're making. And there are multiple logical fallacies. और वो आदमी अपनी regular life में भी तुम logical fallacies create करते हो. For example, if you were to debate on any topic, just give me a topic. BMI, the body mass index is not accurate measurement for the DI. For the? For Human Development Index, HDI. BMI is not the correct parameter for HDI. Yeah. Okay, fine. So BMI is not the correct parameter to measure the HDI. अब इस पे हम क्या प्रो बोल सकते हैं, क्या अगेंस्ट बोल सकते हैं? यार थोड़ा ऐसा टॉपिक लो जो सब सारे लोग इंक्लूड हो सके ना. कोई गिव मी अ easier topic. Okay, let's say iOS is better than Android. Now that is a very easy topic, right? iOS is better than Android. Now it also evokes a certain kind of emotion inside you. The moment is said, right? So you feel क्या ऐसे कैसे बोल दिया, right? और so an Android person would say ऐसे कैसे बोल दिया, and an iOS person would say हाँ एकदम correct, right? So your feelings are coming in immediately.
There's no logic. There's only feelings. No, sir. Kya no? हाँ बोलो. Is iOS better than Android? Even though I use iOS, I am against it. Why? Because there are so many features that iOS doesn't have and Android does, like hacking and stuff. You can't say so many features. You have to give something, right? Huh? I told hacking and stuff and all. Particular And apps which can't be pros downloaded. and cons. But I would say iOS is Can better download because it in it has Android. stronger security. In an Android, it's very easy to hack something, and I've had Android for the past 2 years, so I know that like firsthand. Okay. A very, very common logical fallacy is called appeal to authority. Okay. What happens in that is, see, the moment I said this, you guys started to put your point forward. Question is whether Android is better or iOS is better. Swayam spoke, Ishita spoke, and one sentence both of them said is, I have had iOS, right? Which has no value in this debate. But by saying that, you're creating an assumption that because I have had iOS, my saying is better than your saying. You get it? Are you getting this point? Yes. And you'd see this in every debate every day, either at home or on television. But in technical debating, this is not allowed. Because we don't care what your experience is, because we can't cross So check इसके that points experience. कट जाते हैं. Yes, sir. उसमें points But कट he- जाते हैं. Because we can't cross check, right? So that statement has no value. But as humans, we end up doing it. Similarly, in this question that I just said, वो अभी iOS better है कि Android better है, वो तो हम prove नहीं कर सकते, तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि हमारा logic सही था कि गलत था. But ये जो 1000 रुपए वाला question है, वो तो mathematics है. But invariably, whenever I ask this question, people end up using stories to justify their answer. You get it? And when they use story, I use story to counter them. And then they agree, हाँ सही, correct. So it all comes down to how convincing is a story. But math is not story. Math is clear. So here's the answer. Excuse me, sir. हाँ जी. So I'm so sorry, but if the question is small and it can be said, like, could you please mind repeating it? Can't hear what? If the question is small and like it would not take much time. Oh, would you achha, mind sorry, repeating? Arna was not here. Oh, okay. Quite okay. I'll quickly tell you the question. You are the owner of a shopkeeper. A lady comes to your shop to buy something, and she finally chooses a top which is worth 200 rupees. Okay? She gives you a 1,000 rupee note. You don't have the change, so you go to the next shop to get the change. You get 1,000 rupees in change from the next shop. How much you return to the lady? We should be returning 800. Which you did. So you returned 800, and so she took your 800 rupees and she took the 200 rupees top and she went off. Till now, everything is cool. But after 5 minutes, the next shopkeeper comes to you and says that this particular note which you gave me is fake. So this 1,000 rupee note is fake. Give me 1,000 rupees. So now you give 1,000 rupees to that particular shopkeeper also. So what's your total loss? So, Hmm. so I think it's 2,200. Why 2,200? So because first 1,000 rupees fake. Just a Then second. Just a second. Hello. Yeah, tell me. Sorry. Yeah, so first 1,000 rupees fake, then the 200 rupees the t-shirt. So the total will be 1,200 the loss for now. Then the shopkeeper asks for 1,000 rupees back because it was fake. So plus 1,000. So 1,200 plus 1,000 would be 2,200. Okay, so answer is wrong. Now I'll give you a method to solve it. Use mathematics.
You've learned mathematics, so use mathematics. Suppose you started with X rupees in your drawer and you had 200 rupees of top. So this was your initial money that you had, right? Yes, sir. Then the lady came and she gave you 1,000 rupee note whose actual value is what? 0. Zero. Zero. So she added 0 rupees to your account. You went to the next shopkeeper and you brought back how much? 1,000 rupees change. Which is real 1,000 rupees. So right Yes, now sir. you have this with you, Yes, sir. out of which the lady took how much? She took 200 rupees top 800. and she took 800 rupees in cash. Yes, sir. So So this is how much you're we left have- with. yeah. And then your shopkeeper comes and takes 1,000 rupees from you. This is what you're left with, right? Let's Yes. simplify. This is what you had in the start, x plus 200. Now you're left with this. So let's see how much it comes down to. 1,000 gaya idhar. Now you're left with x plus 200. वो तो initial था ही, minus 1,000. Yes, sir. So what's your total loss? Yes, sir. So 800 rupees. Ishita, what's your total loss? So it should be 800 if you transpose. टोटल लॉस होगा फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो इनिशियल तो x प्लस 200 था, फाइनल x प्लस 200 माइनस 1000 है, तो जो पहले तुम्हारे प्लस x प्लस 200 था और अभी कितना कम हो गया? The x plus 200 minus 1000. तो 1000 कम हुआ ना, टोटल रिडक्शन इज 1000. दिस इज योर लॉस. Yeah. So total loss is 1000, 1000. which is easy with mathematics. And now you can't do rebuttal because I have made everything very objective. There's no rebuttal. Yeah. But now I'll tell you a story. And now this time my story will be extremely convincing. So when you took the 1,000 and blah blah blah, वो उधर से तुम 1,000 लेके आए, इसको दिया तुमने 800, वो 200 लेके गई. फिर ये आदमी आया, इसने बोला कि भाई ये 1,000 रुपए तो नकली हैं, तुम मेरे को पैसे दो, तो तुमने उसको पैसे दिए और वो 1,000 रुपए का नोट रख लिया, राइट? तो अगर ये 1,000 रुपए का नोट असली होता तो सारे ट्रांजैक्शन क्लियर होते, तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होता अगर ये 1,000 रुपए का नोट सही होता, राइट? Yes, sir. But suddenly you took away the value of this 1,000 rupee note. Now the value is 0. So what's your nuksan? 1,000. 1000. That story. But don't back it on story, because the moment there is a better guy who can convince me, I might get confused. Hence mathematics. Mathematics is very important. राइट? और ये तो सिंपल था, लेकिन तुम सोचो तुम एक्चुअली दुकान पे बैठे हो सकते हो ना, ये असली में तुम्हारी जिंदगी में हो सकता है और तुम्हें पता ही नहीं होगा कि नुकसान कितना हुआ. अच्छा, मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई गॉट अ लॉट ऑफ दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बाय द वे. आई यूज्ड टू, बहुत पहले मैं बहुत सारे करता था क्विजिंग, और वी यूज्ड टू हैव अ प्रोडक्ट इन आवर कंपनी. नाउ आई हैव फॉरगॉटन सम, बट मेरे को अचानक अभी याद आया, पता नहीं क्यों याद आया. आई थिंक आई टीच, हाँ, ये मैथमेटिक्स में उसका वो हो रहा था ना, 18 minus 9 और वो सब. Then I remembered I should do this 1,000 wala. But cool. Did you guys enjoy? Yes, sir. Yes, sir. Cool. Yeah. इतना dead क्यों यार तुम लोग? Why so dead? I'm still thinking, literally. Oh. You proved it mathematically also, and you proved it by story also. That's... My initial answer was correct. No. I said 1,000 rupees. No. Don't be mistaken. Your initial answer was a tukka, which happened to be correct.
because you change your answer. If you were very confident about your answer, you would have explained it to me and you would have stood by that answer, right? अगर मैं अभी 1200 आंसर प्रूव कर देता तो जिसका 1200 आया वो कहता अरे मेरा आंसर तो सही था, बट उसका आंसर लग गया था 1200. दैट्स द पॉइंट. यू गेट इट? हाँ, So beautiful, Fawzan. Like I solved this. Who? मेरा भाई तुक्का नहीं confident about it. So I answer once. Am I the only one Sir, who can't Agrima. hear her properly, or are you guys also not able? Not able. Agrima, your network is not correct. But anyway, cool. तो ठीक है, समर्स में और कुछ पजल्स करेंगे हम शुरुआत में, so that मैजिक करना तुम लोग को. मैजिक I can read your mind. I can read your mind. Yeah, let's see. तुम क्या सोच रहे हो मैं बता सकता हूँ. Sir, ये next class sir. हाँ, अभी नहीं This करेंगे, mind अभी नहीं reading. करेंगे, but I'm asking you, do you guys want to do magic? Yes sir. क्योंकि इसके लिए तो पूरा सेटअप करना पड़ेगा ना, मैजिक ऐसे नहीं हो पाता. ठीक है, ऑफलाइन क्लास में करेंगे मैजिक. चलो, ओके, So टेक when केयर. is the offline class? ये सैटरडे को करना है क्या तुम लोग को? Sir, no, I'll be online. अच्छा, तो ये सैटरडे नहीं करते फिर. ये सैटरडे मेरी भी ग्रेड 12 की क्लास है, तो वील डू नेक्स्ट सैटरडे. अभी तुम्हारे पास एक फॉर्म आएगा जिसमें तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि तुम कौन कौन से दिन ऑफलाइन आ सकते हो. देन अकॉर्डिंगली विल प्लान ऑफलाइन. सर सारे दिन का ऑप्शन, सारे क्लासेस का ऑप्शन है? नहीं नहीं, सिर्फ सैटरडे ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत बोरिंग है सर, ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है. बट सैटरडे है क्योंकि सब लोग नहीं आ सकते ना. ठीक है, चलो, ऑलराइट, बाय बाय बाय. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye.